Hello students, welcome to Mintu Maths classes. In the last video we have started our CBSE class 12 sample paper 1. Today we are going to solve it completely. Your question 29 is, let S be the set of points in a plane. आपके जो S है that contains the all set of points in a plane and R is a relation in S. और R कैसे define किया हुआ है? The two points are related when if the distance between them is less than 2 units. DAB represents the distance between the points A and B. So the दो points कब related होते हैं under this relation if their distance between them is less than 2 units. Is R an equivalence relation? तो आपको एक relation को equivalence relation prove करने के लिए you have to prove that the relation is reflexive, symmetric and transitive also. First of all, let us try to find out whether the relation is reflexive or not. For the reflexivity, every element must be related to itself. देखो, since the distance between A and A, एक पॉइंट का अपने आप से डिस्टेंस क्या होता है? 0. That is less than 2. That implies AA belongs to this relation for all A. This relation for all A belongs to S. Hence, R is reflexive. Now, let us try to check for symmetric. सिमेट्रिक के लिए अगर आप मान लेते हो कि लेट A is related to B but you have to show B is also related to A, that implies distance between A and B is less than 2. That must imply कि A का B से डिस्टेंस जब less than 2 है तो B का A से भी डिस्टेंस less than 2 होगा. That will imply that BA belongs to this relation. Hence, R is symmetric. Now, let us check your relation for transitivity. Let your A is related to B and B is related to C. That implies that A और B के बीच का distance less than 2 है and distance between B and C is also less than 2. But ये transitive नहीं हो सकता. So we have to create an example जहाँ पर दोनों का distance less than 2 है but the distance between A and C is greater than 2. तो आप कंसीडर करो ABC जो कि तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हों. डिस्टेंस बिटवीन A एंड B मान लो 1.5 है. डिस्टेंस बिटवीन B एंड C कैन बी टेकन एज 1.7. बोथ आर लेस देन 2. सो A is related to B, B is related to C. But the distance between A and C, because since they are collinear points, so the distance between A and C is 3.2. So, which is greater than 0. So, A is not related to. Now, consider A, B, C are three collinear points such that distance between AB is equals to 1.5, which is less than 2. That implies A is related to B and distance between B and C is 1.7, which is less than 2. That implies B is related to C. But distance between A and C is equals to, since they are collinear points, this is equals to 1.5 plus 1.7, that is 3.2, which is greater than 2. That implies A is not related to C. Hence, R is not transitive.
और अगर आपका फंक्शन ट्रांजिटिव नहीं है, कोई भी तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो आपका फंक्शन, आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। देयरफॉर R is not an equivalence relation. Your 30th question is, if x is equals to 1 upon y, then show that dx by dy is equals to this. तो आपका x is a function of y, but dx by dy में x और y दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. Let us start with differentiating your equation. Your x is equals to 1 upon y. Now differentiate with respect to y. We get dx by dy is equals to minus 1 by y square. बट आपको जो राइट हैंड साइड पे चाहिए वो x और y दोनों की फॉर्म में चाहिए. तो आप let us multiply and divide by 1 plus y raised to power 4 and root 1 plus y raised to power 4. अब न्यूमरेटर वाले y को you can replace with 1 by x. So you can write it as 1 upon x raised to power 4 root 1 plus y raised to power 4. Now this will come be equals to x raised to power root of 1 plus x raised to power 4 upon x raised to power 4 का x बाहर आ जाएगा, x square root 1 plus y raised to power 4. Now we know that 1 upon y square can be written as x square minus x square upon x square root of 1 plus x raised to power 4 plus 1 plus y raised to power 4. X square will cancel out and you are left with 1 plus x raised to power 4 upon 1 plus y raised to power 4. Your 31st question is, prove that the function y is equals to signum of x minus 1 is not differentiable at x is equals to 1. So students, you must know what is signum function. सिग्नम फंक्शन आपका कैसे डिफाइन होता है? सिग्नम फंक्शन ऑफ x is defined as -1 when x is in the left of 0. At x is equals to 0 it is defined as 0, and at to the right of 0 it is defined as 1. So the signum function of x minus 1 will be defined at point x is equals to 1. तो x is equals to 1 के लिए ये कैसे डिफाइंड होगा? -1 when x is less than 1, 0 when x is equals to 1 and 1 when x is greater than 1. तो आपका सिग्नम फंक्शन, आपका फंक्शन ऐसे डिफाइंड है. नाउ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट when the left hand derivative and right hand derivative at that point both exists and are equal. So let us start with finding out the left hand derivative, that is equals to limit h tends to 0 f of 1 minus h upon h. Now this can be written as limit h tends to 0, f of 1 is 0, f of 1 minus h, 1 के लेफ्ट में your function is defined as -1 upon h. So this is equals to limit h tends to 0 1 upon h, and this function the limiting value of this function does not exist, which does not exist finitely. Therefore, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एट x इज इक्वल्स टू 1 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. हेंस fx is not differentiable at
x is equals to 1. Now the optional question of 31st is you have to find dy by dx if ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. So आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके dy by dx निकालना है. So let us first write this equation by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Now differentiate with respect to x. So x square का आपका आ जाएगा डेरिवेटिव 2x प्लस 2h. xy को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल dy by dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y इंटू dy by dx प्लस 2g डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 2f डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ c कांस्टेंट इज 0. नाउ dy by dx की टर्म्स आप लेफ्ट साइड पे रख लो, देन यू विल गेट 2hx प्लस 2by प्लस 2f dy by dx. और अपनी जो सिंपल टर्म्स हैं ये सब दूसरी साइड ले जाए, a2ax माइनस 2hy and minus 2g. So dy by dx will be equals to minus 2ax. आप माइनस 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ax प्लस hy प्लस g अपॉन यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, hx प्लस 2 प्लस by प्लस f. 2 can cancel out and this is your answer. The 32 question is a point on the hypotenuse of a right angle triangle is at a distance of A and B from the sides. एक right angle triangle के hypotenuse पे एक point है जो कि जिसका sides से दोनों sides से distance A and B है. So let us draw the figure in a right angle triangle. A point on the hypotenuse, suppose M is any point on the hypotenuse of a right angle triangle, is at a distance of A and B from the sides. तो distance will always be perpendicular distance. तो इसका perpendicular distance इस साइड से suppose A है और इस साइड से the perpendicular distance of this point is B. If this is the you are given, then you have to show that the minimum length of hypotenuse is this. First of all, what is the length of the hypotenuse? Let us try to find out that and then we are going to minimize that length. To find the length of hypotenuse, we have to find AM and MC. Let us introduce a variable theta. अगर आपका since they are corresponding angles and they are equal, so these two are parallel lines. So if this angle is theta, this will also be theta. By applying trigonometry, your hypotenuse perpendicular is A, so your hypotenuse will be, let us take this as P and Q. So MC, by applying trigonometry in triangle A, in triangle MPC, आपका MC upon MP will be equals to hypotenuse upon perpendicular, and that is equals to cosec theta. So your MC will become, MP is A cosec theta. This will be A cosec theta. और ये भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें भी आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं इन ट्राइंगल AQM. नाउ यू हैव टू फाइंड AM. So AM upon QM
AM upon QM will be equals to, this is your hypotenuse upon base and this will become sec theta. So AM will be equals to, QM is B sec theta. So this length is B sec theta. Let the length of the hypotenuse is H. Let H be the hypotenuse. So H is equals to A cos sec theta plus B sec theta. आपको अब इस हाइपोटेनियस की लेंथ को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए यू आर गोइंग टू फर्स्ट टेक फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड दैट इज माइनस कॉस सेक थीटा कॉट थीटा प्लस बी सेक थीटा टेन थीटा and that will be equals to minus A cos sec theta cot theta plus B sec theta tan theta. For the stationary points you are going to put your first derivative is equals to 0. So A cos sec theta cot theta will be equals to B sec theta tan theta. This will imply cosec is 1 by sine, cot is cos by sine. So A cos theta upon sine square theta will be equals to B. This is 1 upon cos, sine upon cos. So sine theta upon cos square theta. And this will, by cross multiplying it, we are getting A cos cube theta will be equals to B sine cube theta. cos क्यूब थीटा को अगर आप डिवाइड कर देंगे वहाँ, देन tan क्यूब थीटा विल बी इक्वल्स टू a अपॉन b एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू a रेस्ट पावर 1 by 3 अपॉन b रेस्ट पावर 1 by 3. So this may be this one of the stationary point. Now we are going to check whether this is a point of minima or not. So to check this you have to first take second derivative of your hypotenuse. So the second derivative is, आप कैसे करेंगे, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, माइनस ए कॉसेक थीटा एज इट इज कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज कॉसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस बी सेक थीटा एज इट इज टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक टेन थीटा एज इट इज एंड सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, आप इन दोनों में से ही माइनस कॉमन लेके बाहर कैंसिल कर सकते हैं. सो ए टाइम्स कॉसेक क्यूब थीटा माइनस प्लस cosec theta cot square theta plus b times sec cube theta plus sec theta into tan square theta. This is your second derivative. Since your theta is an acute angle, so this, because this is the angle of a right angle triangle, तो ये acute है, तो आपके सारे tan theta सेक कोसेक थीटा कॉट थीटा सेक टेन ये सब पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव होंगे तो सो योर डबल डेरिवेटिव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 1 by 3 upon b raised to power 1 by 3 will be positive. That implies this is a point of minima. तो आपको मिनिमम लेंथ निकालनी है अपने हाइपोटेनियस की. आपके हाइपोटेनियस की लेंथ ऐसे है. अब आपको कॉसेक थीटा और सेक थीटा की लेंथ की वैल्यू निकालनी है टू फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ योर हाइपोटेनियस. फॉर दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट अ राइट एंगल ट्राइंगल. इफ दैट दिस इज थीटा, तो tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है. दिस इज a रेज़्ड पावर 1 by 3 एंड दिस इज b रेज़्ड पावर 1 by 3. And your hypotenuse will be a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3.
root of a square plus b square. Now your minimum length of your hypotenuse will be equals to a cosec theta. Cosec theta will be equals to, cosec क्या होता है, hypotenuse upon perpendicular. So this is root of a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 upon a raised to power 1 by 3 and your plus b into sec theta. Sec theta आपका क्या आ जाएगा, hypotenuse upon base. So root of a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 upon b raised to power 1 by 3 and this is equals to, ये आप कॉमन ले सकते हो, root of a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 और ये कॉमन लेने के बाद you are left with a upon a raised to power 1 by 3 that is equals to a raised to power 2 by 3 and b upon b raised to power 1 by 3 is b raised to power 2 by 3. Now this will be equals to a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 whole raised to power 3 by 2 and this is what you want to prove, that the minimum length of hypotenuse is this. Your 33rd question is evaluate integral 0 to 1 modulus of 3x minus 2 dx. First of all, let us define your modulus function. Your modulus function of 3x minus 2 is equals to, the critical point is 2 by 3. When x is greater than equals to 2 by 3, the function is positive and when x is less than 2 by 3, your function is negative. So negative of this function is 2 minus 3x. Now and 3 by 2 आपको इंटीग्रेट करना अपना फंक्शन बिटवीन 0 to 1 और आपका फंक्शन विद इन 0 to 1 एट 2 by 3 चेंज हो रहा है. बिटवीन 0 to 2 by 3 योर फंक्शन इज नेगेटिव, सो 2 minus 3x and 2 by 3 to 1 your function is defined as 3x minus 2. So integral 0 to 1 modulus of 3x minus 2 dx can be written as integral 0 to 2 by 3 integrate 2 minus 3x dx plus between 2 by 3 to 1 you are going to integrate 3x minus 2 dx. Now the integral is 2x minus 3x square upon 2 within the limits 0 to 2 by 3 plus 3x square by 2 minus 2x and between the limits 2 by 3 to 1. Now this will give you, जब आप 2 by 3 इसके अंदर अप्लाई करते हैं then this is equals to 4 by 3 और 2 by 3 अगर यहाँ पर पुट करेंगे then you are left with 2 by 3. Now minus जब 0 पुट करेंगे your function will give 0 only, तो उसकी नीड नहीं है. प्लस अब आप अपने इस फंक्शन में पहले 1 पुट करें, यू आर लेफ्ट विथ 3 by 2 minus 2 माइनस जब आप अपने फंक्शन में 2 by 3 पुट करते हैं यू आर लेफ्ट विथ 2 minus 3 minus 4 by 3. So this will be equals to 2 by 3 and this is minus 1 by 2 and this is minus 2 by 3, so plus 2 by 3, 4 by 3 minus 1 by 2. This is equals to 8 minus 3. So 5 by 6 is your 5 by 6 square units will be your answer. Your 34th question is using integration find the area of the region, the set of all points where 9x square plus y square is less than equals to 36 and you can easily see that this is an ellipse and 3x plus y is greater than equals to 6 and this will represent a line. So let us try to make a sketch of these two. Yeah, 9x square plus y square
इज इक्वल्स टू 36 कैन बी रिटर्न एज, आप 36 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 9 4 ज़ा 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1. So this can be written as x square upon 2 square plus y square upon 6 square is equals to 1. So this represents an ellipse with major axis along y axis. तो ये एक आपका ऐसा ellipse आ जाएगा. मेजर एक्सिस आपका y एक्सिस पे है और माइनर एक्सिस x एक्सिस पे है. एंड इनइक्वालिटी अगर आप सेटिस्फाई करके देखते हैं, ओरिजिन आपका ये दिस विल बी इनसाइड और आउटसाइड. यू कैन ओरिजिन इनसाइड में है एंड ओरिजिन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, सो इनसाइड इज योर feasible region. Now let us take your line 3x plus y is equals to 6. तो अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो x by 2 plus y by 6 is equals to 1 and this is an intercept form of a line. तो x एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे 6 इंटरसेप्ट बना रहे, so your line can be, then your line will be like this. Now your feasible region will become this area. So you have to find the area of this region and this can be easily find out if you are going to integrate between 0 to 2. First of all integrate, ये आपका y1 वाला ले लो, ellipse is y1 and your line is take y2. So your required area will be equals to, required area will be equals to between 0 to 2 you are going to integrate y1 first, then उसके अंदर से आप subtract कर दोगे your area between 0 to 2 y2 dx. y1 आपका ellipse में से आप y की वैल्यू निकालो. जब आप ellipse में से y की वैल्यू निकालेंगे then what will you get? Your y square upon 36 is equals to 1 minus x square upon 4, that is 4 minus x square upon 4. So your y square is equals to 36 by 4 into 4 minus x square, और अगर आप रूट ले लेंगे then you will get 3 root of 4 minus x square. So आपका इलिप्स में से जो कर्व निकलेगा y1 दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 2 y2. लाइन में से आप y की वैल्यू निकालेंगे यू विल गेट 6 माइनस 3x. सो 3 कैन बी टेकन आउट हेयर फ्रॉम हेयर ऑल्सो. तो क्योंकि लिमिट सेम है यू कैन मर्ज द टू इंटीग्रल्स. Minus 3 can you have taken out, so this dx. Now this will be equals to integral लेंगे, integral root of a square minus x square is x by 2 root of a square minus x square minus plus a square by 2 that is 2 sin inverse x by a minus 2x plus x square by 2 in between 0 to 2. यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई किया and your formula was using integral 0 to a. इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रल बता देती हूँ मैं. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? x by 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x by a. By using this formula we have integrated this portion. Now first of all आप क्या करेंगे? 2 इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे then you will get this thing 0 and 2 upon 2 is 1. Sin inverse 1 is pi by 2. So this will be equals to pi minus 2 to the 4 and
2 to the 4/2 will give you 2 माइनस जब आप 0 रखेंगे x की जगह, दिस विल बी अगेन 0, दिस विल ऑल्सो 0, ये सारा आपका 0 हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी 3 times pi minus 2. This much square units will be your answer. The optional question in question number 34 is make a rough sketch of the region given below. This is the region and find its area using integration. And your region is bounded by 6 curves, I think. This second one, third one, fourth one, fifth and sixth. Let us write down all these. Y is greater than equals to 0 is your first region. Second is y is less than equals to x square plus 3, or you can write it as x square is greater than equals to y minus 3. Now the third one is y is greater than equals to 0, which we have already written. Next one is y is less than equals to 2x plus 3, or we can write it as this is a line, okay. And the next one is x is greater than equals to 0, and the last one is x is less than equals to 3. So let us try to sketch all these. Now this is your graph. Your y is greater than equals to 0 and x is greater than equals to 0. This is y is equals to 0 and x is equals to 0. So greater than equals to 0, so your bounded area is confined to first quadrant. Now x is less than equals to 3. अगर आपका x is less than equals to 3, x is equals to 3, let us take this line है, this is x is less than equals to 3, is equals to 3, तो less than equals to 3 आपका ये वाला पोर्शन हो गया. So next is y is equals to 2x plus 3. जब y is equals to 2x plus 3 को आप ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखो वो x is equals to 3 को किस वाले उस पर कट कर रही है. When x is equals to 3, your y will be equals to 2 3s is 6, 6 plus 3 9. When x is equals to 3, y is equals to 9. So this is 3 9 point. And the next one is when y axis को देखते हैं ये लाइन कहाँ कट कर रही है. Put x is equals to 0, so y will be equals to 3. So 0 3 is another point. Take 0 3 here, and your line will be like this. This is the line. Okay. अब आपको अपनी इनइक्वालिटी में आप ओरिजिन पुट करके देख लो. ओरिजिन विल सेटिस्फाई 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ओरिजिन की तरफ है. सो दिस इज द बाउंडेड एरिया. इस साइड, इस लाइन की इस साइड, दिस इज योर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. एंड द लास्ट वन इज यू आर गोइंग टू sketch x square is equals to y minus 3, and this is quadratic in x and linear in y, so it represents a parabola. तो आपको ये देखना है सबसे पहले x square is equals to 4ay का वर्टेक्स आपका ओरिजिन होता है, बट हेयर वर्टेक्स इज 0 3, तो एक पॉइंट तो ये है आपका. नाउ अब आप ये देख लो कि इस वाली लाइन को ये कहाँ कट कर रहा है. अगर आप y को y की जगह 2x माइनस 2x प्लस 3 पुट करते हैं अपने पैराबोला में, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 3. सो y माइनस 3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2x. सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 आएगा और 2 आएगा. तो x इज इक्वल्स टू 0 पे इस लाइन पे, और x इज इक्वल्स टू 2 पर ये कट कर रहा है आपका पैराबोला. This is point 2. Now अब आपको ये देखना है आपका बाउंडेड रीजन कौन सा है.
तो इसको इस ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाते हैं, देन ओरिजिन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, यस ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस कर्व का आपको डाउनवर्ड ये वाला साइड लेना है. सो दिस इज योर फीजिबल रीजन. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए था आपको, ठीक है. y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस लाइन का डाउनवर्ड साइड, इस लाइन की इस साइड और पैराबोला का भी डाउन साइड. सो दिस इज योर फीजिबल रीजन. सो द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन कैन बी रिटन एज 0 से 2 तक आप पैराबोला में से इक्वेशन निकाल लो. लेट अस टेक दिस एज y1 एंड 2 to 3 आप इस लाइन का एरिया ले लो. लेट अस टेक दिस एज your y2. So the required area will be equals to between 0 to 2 you are going to integrate y1 dx plus 2 to 3 you are going to integrate y2. So your y1 will be equals to y1 में से, इस वाले ग्राफ में से आप y की वैल्यू निकालेंगे, इट विल कम आउट x² प्लस 3 एंड बिटवीन 2 to 3 y2 आप इस लाइन में से y की वैल्यू निकालेंगे, यू विल गेट 2x प्लस 3 dx. नाउ इंटीग्रेट x³ अपॉन 3 प्लस 3x इन बिटवीन 0 to 2 प्लस 2x का इंटीग्रल x² प्लस 3x in between 2 to 3. Now when you put 2 here, 8 upon 3 plus 6 minus 0 जब आप पुट करेंगे it will become 0, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. प्लस when you put 3 here, 3 3s are 9 plus 3 3s are 9 minus if you put 2 x is equals to 2 then 4 plus 6 and this is 8 upon 3 plus 6 plus 18. 6 plus 18 is 24. 24 minus 10 is 14 and this is equals to 8 plus 42 and this will be 50 upon 3 square units. 35th question is find the general solution of the differential equation this, and if you can see this can be easily separable to variables. So dy के साथ y के वेरिएबल्स और dx के साथ x के वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको इस x को यहाँ पर शिफ्ट करना है. सो शिफ्ट योर x, cos y dy is equals to x e raised to power x log x plus e raised to power x upon x dx. Now integrate both sides. Now cos y integrate cos y dy. अब आपका e raised to power x can be taken out and x log x upon x will be log x plus 1 upon x dx. Now we are going to use a formula. There is a formula that integral e raised to power x if you are written fx plus उसका डेरिवेटिव, अगर ऐसा है आपका your integrand is of this form then you can directly write it as e raised to power x fx plus c. तो यहाँ पर भी आपकी वही सिचुएशन है, log x का डेरिवेटिव 1 by x उसके साथ में लिखा हुआ है एज अ सम. So you can directly give the answer of this integral. So your answer is cos y dy. Cos y का integral is sin y is equals to e raised to power x into fx is cos log x plus c, and this is the general solution
of differential equation. 36th question is, if A inverse is equals to this and B is this matrix, then you have to find AB inverse. So let us start with finding out AB inverse. What is the inverse of AB? That is equals to B inverse into A inverse. आपके पास already, you are already given A inverse, तो we have to first find out B inverse. So B inverse के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? First of all find determinant B. Determinant B is 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1, and this is equals to 1 into 3 minus 0 minus 2 into minus 1 minus 0 minus 2 into 2 minus 0, and that is equals to 3 plus 2 minus 4, which is 1, which is non-zero. That implies your B inverse exists, और B inverse exist करता है तो आपको क्या करना है? Now you have to find adjoint B. एंड एडजॉइंट बी कैसे निकालते हैं आप? हर एक बी के हर एक एलिमेंट को उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं. कैपिटल B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, 32 एंड 33, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. नाउ द कोफैक्टर्स ऑफ B11, 11 का कोफैक्टर क्या है? 3 minus 0, that is 3 only. B12 कोफैक्टर ऑफ 1 2 is -1 minus 0 -1, बट क्योंकि ये ऑड पोजीशन है तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा. नाउ 1 3, B13 will be equals to 2 minus 3, that 2 minus 0, that is 2. Now B21, 2 1 will be equals to 2 minus 4. 2 minus 4 will be equals to minus 2, but odd position है तो positive 2 कर लेंगे. B22, 2 2, that is 1 minus 0, so your answer is 1. B23, 2 3, that is minus 2 minus 0, so your this is minus 2, but odd position है, you will take 2. B31, this is 0 minus minus 6, so positive 6. Now B32, this is 0 minus 2, so minus 2, but you will take 2 only. B33, this is 3 minus minus 2, 3 plus 2 is 5. Now you are going to take transpose of this, so adjoint of B is equals to 3 1 2 2 1 2 6 2 5. This is adjoint B. Now you can easily take write B inverse. अब B inverse आपका क्या हो जाएगा? 1 upon determinant B into adjoint of B. So determinant B is 1, 1 upon 1, तो एडजॉइंट बी के इक्वल ही आ गया. 3 2 6 1 1 2 2 2 5. This is your B inverse. Now come to your statement A B inverse, that is B inverse into A inverse. Now what is B inverse? 3 2 6 1 1 2 2 2 5. And what is A inverse? A inverse you are given 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 2. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 3 is 9 minus 30 plus 30. Now minus 3 plus 12 minus 12. Now 3 minus 10 plus 12.
Now 3 minus 15 plus 10. 3 minus 15 plus 10. 2, 1, 3 minus 15 plus 10. 2, 2, minus 1 plus 6 minus 4. Minus 1 plus 6 minus 4. Minus 1 plus 6 minus 4. Now 2, 3. 1 minus 5 plus 4. 1 minus 5 plus 4. Now 3, 1. 6 minus 30 plus 25. 6 minus 30 plus 25. And 3, 2. Minus 2 plus 12 minus 10. Minus 2 plus 12 minus 10. And 3, 3 is 2 minus 10 plus 10. 2 minus 10 plus 10. And this is equals to 9. This will be minus 3. This will be 5. This will be 13 minus 15 minus 2. This will be minus 5 plus 6 is 1. This will become 0. This will be 31 minus 31. This will become 0. And this will be equals to 2. So this is your final answer. Optional question of 36th is, if A is this, you have to first find A inverse. तो सबसे पहले आपको A inverse निकालना है. A inverse निकालने के लिए you are going to first take determinant of A. 1, 2, 2, 2, 1, 2 and 2, 2, 1. And this will be equals to 1 into 1 minus 4 minus 2 into 2 minus 4 plus 2 into 4 minus 2. This is equals to 1 into minus 3. Minus 3, 2 into minus 2. तो पॉजिटिव हो जाएगा. 2 2 is 4 and this is 2. 2 plus 2 4. So 8 minus 3 is 5, which is not equals to 0. That implies your A inverse exists. और अगर एग्जिस्ट करता है तो यू हैव टू फर्स्ट टेक एडजॉइंट ए. एंड एडजॉइंट ए क्या होता है? हर एक एलिमेंट को आप उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं. 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3 और लास्ट में ट्रांसपोज ले लेते हैं. नाउ व्हाट इज A1 1? 1 1, that is 1 minus 4 minus 3. A1 2, 1 2 is 2 minus 4 minus 2, but odd position है, take positive 2. A1 3, 1 3, this is 4 minus 2, that is 2. A2 1, 2 1, this is 2 minus 4, that is minus 2, but odd position है, take positive 2. 2 2, 2 2, your answer is at 1 minus 4, that is minus 3. 2 3, 2 3, this is 2 minus 4 minus 2, but odd position है, take positive. Now 3 1, 3 1, this is 4 minus 2 2. 3 2, 3 2, this is 2 minus 4 minus 2, but take positive 2. 3 3, 3 3, this is 1 minus 4 minus 3. Now take transpose of this. So adjoint of A is equals to minus 3 2 2, 2 minus 3 minus 2 minus 3 2 and 2 2 minus 3. क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इसलिए A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज सेम ही आ गया है आपका.
तो अब आपके पास एडजॉइंट ए भी है और ए डिटर्मिनेंट ए भी है. यू कैन इजीली फाइंड योर ए इनवर्स. ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए into adjoint A. Adjoint A is -3, 2, 2, 2, -3, 2 and 2, 2, -3. Now अब ये कह रहे हैं, आपने यहाँ तक का क्वेश्चन कर लिया. नाउ they are saying hence का मतलब A इनवर्स को यूज करके you have to prove this equation. तो A इनवर्स को यूज करके इस इक्वेशन को प्रूव करना है. लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन 4A - 5I इज इक्वल्स टू 0. आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को. सो A इनवर्स इंटू A स्क्वायर कैन बी रिटन एज A इंटू A -4, A inverse into A -5, A inverse into I is equals to 0. And this can be A inverse into A will become I and I into A will become I into A -4 into I -5 multiplied by A inverse is equals to 0. So you can write it as A -4I, इसको आप वहाँ शिफ्ट कर दें, इज इक्वल्स टू 5 A inverse. You have to prove this. Now let us consider left hand side. Your left hand side is A -4I. What is A? A is 1 2 2 2 1 2 2 2 1 minus 4 times I is 4 0 0 0 4 0 0 0 4. Now if you subtract these two matrix, then you will get 1 minus 4 is -3, 2 minus 0 is 2, 2 minus 0 is 2, then 2 minus 0 is again 2, 1 minus 4 is -3 and 2 minus 0 is 2, 2 minus 0 is again 2, 2 minus 0 is again 2, then 1 minus 4 is -3. This is your left hand side. Now your right hand side is 5 times A inverse. Now let us try to find out right hand side also. 5 times A inverse, that is 5 times A inverse will be equals to, क्योंकि A inverse के अंदर 1/5 आ रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा. -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3 and this will be equals to your left hand side. So you have hence proved. Question number 37 is find the distance of this point and its image in the line joining the points this and this. So you are given the line joining these 2 points. The coordinates of B is 0 -1 and 3 and the coordinates of C is 2 -3 and -1, and you have to find the distance of this point P 184 and its image. आपको इसकी इमेज भी निकालनी है. Let the image of this is ABC. Now this is perpendicular to PQ is perpendicular to BC. Let us take this point as M. You have to first find the distance of this point from this line. So you have to first find PM. Now you are given BC. So the direction ratios of BC are x2 minus x1, that is 2 minus 0, y2 minus y1, that is -3 plus 1, and
Z2 minus Z1, that is minus 1 minus 3, and they are 2, minus 2 and minus 4, or we can say that 1, minus 1 and minus 2. अगर आप 2 कॉमन ले लें इसमें से तो 1, minus 1 and minus 2 are the direction ratios of BC. Now we know that we can easily find out the equation of BC now. So the equation of BC is equals to, एक point आप कोई भी ले लो, ये वाला ले लो, the point passing through and having direction ratios this. The equation of BC is x minus 0 upon 1 is equals to y plus 1 upon minus 1, z minus 3 upon minus 2. Now let us take a general point equating it with lambda. We are getting a general point on BC, that is x is equals to lambda, y is equals to minus lambda minus 1 and z is equals to minus 2 lambda plus 3. Now these are the coordinates of M. Lambda, minus lambda minus 1 and minus 2 lambda plus 3. Now we can find out the direction ratios of PM. So the direction ratios of PM will be, M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं और P के भी गिवन है, तो PM के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, लैम्डा माइनस 1, माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 8, minus 2 lambda plus 3 minus 4. So the direction ratios are lambda minus 1, minus lambda minus 9 and minus 2 lambda minus 1. Now we know that BC is perpendicular to, PM. So the dot product of their direction ratios are 0. इसके BC के डायरेक्शन रेशियोज 1, minus 1 और 2 हैं और PM के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो आपका क्या आ जाएगा, 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 minus 1 into minus lambda minus 9 minus 2 into minus 2 lambda minus 1, that must be equals to 0. So you will get lambda minus 1 plus lambda plus 9 plus 4 lambda plus 2 is equals to 0. So you will get lambda plus lambda 2 lambda plus 4 lambda 6 lambda minus 1 plus 9 8, 8 plus 2 is 10. So lambda will come out minus 5 by 3. This is the value of lambda. Now substituting this value of lambda, we can find the coordinates of M. So the coordinates of M will be lambda, that is minus 5 by 3, minus lambda minus 1, so 5 by 3 minus 1, and minus 2 lambda will be 10 by 3 plus 3, and that is equals to minus 5 by 3 and 2 by 3 and 19 by 3. Now after getting the coordinates of M, you can easily find out the image point. M is the midpoint of P and Q. Since M is the midpoint of PQ, so 1 plus A upon 2 is equals to minus 8 by 3, and the coordinates of M will become minus 5 by 3, 2 by 3 and 19 by 3. So 1 plus A upon 2 is equals to minus 5 by 3, 8 plus B upon 2 will become
will be equals to 2 by 3 and 4 plus c upon 2, 4 plus c upon 2 will be equals to 19 by 3. So your a will become 1 plus a is equals to minus 10 by 3. So a will be minus 10 by 3 minus 1, that is minus 13 by 3. Now your 8 plus b is equals to 4 by 3. So b will be 4 by 3 minus 8 minus 20 by 3, and 4 plus c is equals to 38 by 3. So c will be equals to 38 by 3 minus 4, and that is equals to 26 by 3. So the coordinates of the image point of P will become, the coordinates of this is minus 13 by 3, minus 20 by 3 and 26 by 3. Optional question of 37 is a variable plane which remains at a constant distance 3p from origin. एक प्लेन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 3p है एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट एंड कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC. तो आपका जो प्लेन है 3 डायमेंशन में, एक जो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को A, B और C पर 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है. तो आपका प्लेन कुछ ऐसा है, दिस इज योर ओरिजिन. इफ योर एक्स एक्सिस इज दिस, सो A एक्स एक्सिस पर A पर कट कर रहा है, y एक्सिस पे B पर कट कर रहा है एंड z एक्सिस पे C पर कट कर रहा है. सो लेट अस टेक दिस पॉइंट एज A0 0, दिस पॉइंट एज 0 B 0 एंड दिस पॉइंट एज 0 0 C. नाउ यू हैव टू शो दैट द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड of triangle ABC. First of all, you are going to find the centroid of triangle ABC. Now let P alpha, beta, gamma, let first of all write down the equation of the plane. The equation of plane cutting the coordinate axis, cutting the coordinate axis at ABC, A, B and C. तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी आती है इंटरसेप्ट फॉर्म में. A इंटरसेप्ट बना रहा है विद x एक्सिस, B इंटरसेप्ट बना रहा है विद y एक्सिस एंड C इज द इंटरसेप्ट अलोंग z एक्सिस. सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इज इक्वल्स टू 1. नाउ द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम origin, distance of one from origin is equals to 3p. Now distance between a point and a line and a plane will become, origin को आप पहले यहाँ पर पुट कर दो, 0 upon A, 0 upon B, 0 upon C minus 1 upon root of 1 upon A square plus 1 upon B square plus 1 upon C square is equals to 3p. जब आप क्रॉस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9p स्क्वायर. नाउ वी नो दैट, टेक इट एज योर सेकेंड स्टेटमेंट. नाउ लेट P whose coordinates are alpha, beta, gamma is the centroid of triangle ABC. तो आपको पता है कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 0 अपॉन 3. सो a प्लस 0 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू अल्फा
0 plus b plus 0 upon 3 is equals to beta, and 0 plus gamma upon 3 is equals to c is equals to gamma. तो आपके पास क्या आ गया है यहाँ से, that your a is equals to 3 alpha, b is equals to 3 beta and c is equals to 3 gamma. आप abc की ये वाली वैल्यूज अगर सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, then you will get 1 upon 9 alpha square plus 1 upon 9 beta square plus 1 upon 9 gamma square is equals to 1 upon 9 p square. That implies 1 upon alpha square plus 1 upon beta square plus 1 upon gamma square is equals to 1 upon p square. Now the locus of point P alpha beta gamma is, आप alpha beta gamma को x y z से रिप्लेस कर देंगे. So 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square is equals to 1 upon p square is the locus of your centroid. 38th question is, solve the following linear programming problem graphically. You have to minimize this your objective function z subject to the constraints x is greater than equals to 3, y is greater than equals to 4 and 6x plus 9y is less than equals to 72. Let us draw these constraints first. This is your coordinate plane and your first constraint is x is greater than equals to 3. Suppose x is equals to 3 is this line. So greater than equals to 3 is this side. Y greater than equals to 4. Suppose y is equals to 4 is this line. And y greater than equals to 4 is this side. Now your next constraint is 6x plus 9y is equals to 72. तो आप 72 से अगर डिवाइड करते हैं then it will give you x upon 12 plus y upon 8 is equals to 1, and this is the intercept form of a line which cuts x axis at, देखो 12 पर आपका वो है 12 is the x intercept and 8 is y intercept. सबसे पहले आप ये देखो x is equals to 3 पर ये किस पर कट कर रहा है. When x is equals to 3, 6 3s are 18. 18 को आप वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, so your y will be 72 minus 18 upon 9 and that is 54 upon 9, that is 6. So एक तो आपका हो गया 36 point, ठीक है, and the other point is y is equals to, आप ले लो y is equals to 4. तो जब आप y को 4 लोगे तो 6x will be 72 minus 36 and x will be equals to 36 upon 6, that is 6. तो सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा 6 4, 3 6 and 6 4. x is equals to 3 पर ये 6 पर कट करेगा, this is 3 6 and y is equals to 4 पर ये x is equals to 6 पर कट करेगा, तो this is 6 4. so your line will be like this. अब आपका जो फिजिबल रीजन हो गया, आप ओरिजिन को अगर इससे सेटिस्फाई करवाते हैं तो ओरिजिन इस लाइन को सेटिस्फाई करता है. सो योर ओपन एंडेड प्लेन इज दिस. इसका ये वाला साइड चाहिए और इस लाइन का दिस पोर्शन एंड दिस लाइन पोर्शन. सो दिस विल बी द शेडेड रीजन, विल बी द फिजिबल रीजन. Now your feasible region is bounded by A, B and C.
A और C आपने निकाल लिए and B is the point where X is 3 and Y is 4. So your corner points are A 3 6, B 3 4 and C 6 4. Now you can easily find out the value of your objective function Z at these points. When at point A, your value of the objective function is 9. At point B, your value of the objective function is 7, x plus y. And at point C, your value of the objective function is 10. And you have to minimize this objective function. So the minimum value of your objective function is 7 at this point B 3 4. The optional part of question number 38 is the corner points of the feasible region determined by the system of linear constraints are as below. आपको corner points सारे A, B, C, D, E given हैं. Your first question is let Z be the objective function. Then you have to find the maximum and minimum values of Z. You already know the corner points. So the corner points are and the value of objective function 2x plus 5y. First corner point is 0 2, B is 2 5, C is 3 6, D is 5 3 and E is 4 0. And the value of the objective function in each case is when x is 0 and y is 2. Your value of the objective function is Z. When x is equals to 2 and y is equals to 5, your value of the objective function is 5 5s are 25 plus 4 29. When x is equals to 3 and y is equals to 6, 6 plus 30 is 36. When x is equals to 5 and y is equals to 3, your value of the objective function is 10 plus 15, that is 25. And when x is equals to 4 and y is equals to 0, your value of the objective function is 8. Now the maximum value is at this and minimum value of the objective function is at this point at 4 0. So the second part of this problem is let Z is equals to ax plus by be the objective function. Then you have to find the condition on A and B so that the equal values of Z occurs at these 2 points. So you are given that Z at C is equals to Z at D. तो Z आपका ax plus b है, C है, x की जगह आप 3 पुट करो एंड पुट y is equals to 6 और D क्या है, x की जगह आप 5 पुट करो और y की जगह you can put 3. So 3a plus 6b is equals to 5a plus 3b. So यहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको यहाँ ले आओ, then you will get 3b is equals to 2a and this is the condition satisfying this problem. So students, we have completed this sample paper. You must be enjoying studying with me. Keep watching my videos. Have a nice day. Goodbye.